Allah was very kind. Allah has always been very kind. रात 11:15 बजे इसने मुझे टेलीफोन किया. I straight away contacted the registrar office of Islamabad. Now it is unusual. Unless you have good professional and personal relationships. Good relations. And you True, have this true, caliber. true. Good PR. True PR. that. And as a caliber, being a good lawyer and as well as a petitioner, then you can be obliged with. Otherwise, it's not normally the case that every time you would go in the middle of the night and the courts would be obliging. मैंने straight away contact किया. तो जो रजिस्ट्रार साहब हैं उनके ऑफिस की तरफ से कम्युनिकेशन हुई 5 मिनट में. भैया आपकी कंटेम्प्ट पिटीशन रेडी है. And we said कि जी 2 minutes में आपको आ रही है. And we sent that petition to him. And 10 minutes after he said कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ सकते हैं. To his surprise, मैंने कहा जी मैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़ा हूँ. Already वहीं हूँ. Oh, बाहर खड़ा हूँ. अच्छा, not just in Islamabad, sitting in front of the high court. Okay. Exactly. And it was happening so quickly. It was like honestly जब आप देखते हैं ना movies में फायर ब्रिगेड या 112 या पाकिस्तान एयरफोर्स को कोई बताया देखो जी हमला हो गया तो 3-4 मिनट्स प्रोटोकॉल है आपने टेक ऑफ कर दिया और फाइटर जेट हवा में होने चाहिए. टेक ऑफ करना बिल्कुल. That was actually the mode that we were following, to be very fair and honest. So that has exactly happened the way I am telling you. So we went to Islamabad High Court. Comes a time रात 1-2 बज गए. ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने सुबह 10 बजे रिपोर्ट मंगवाई. रिपोर्ट सबमिट हुई. उन्होंने कहा जी पंजाब की जुरिस्डिक्शन है. मैंने कहा जी बॉर्डर लाइन है. The court said and it's a codified and uncodified language between a lawyer and the chief justice. मैंने कहा देखो let's not get into the dispute of you have been arrested from here or there. It's better that I will keep the dispute as it is without settling कि तुम ठीक कह रहे हो या इस्लामाबाद पुलिस या पंजाब पुलिस ठीक कह रही है. And I got the signal. मैंने कहा now it's been produced before utter. Just go with the flow. In other words, ओ भाई जाओ राव बिस्मिल्लाह हीरो बनने का टाइम आ गया. अच्छा ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ये वाली बात. ये जो कन्वर्सेशन है आपकी, क्योंकि एक बाहर जो एक हेयर से है वो ये है कि वो उनको कोई कॉल आई और उन्होंने कहा कि नहीं मैं यहाँ से नहीं करूंगा. It was not like that. वहाँ पे पहले ही अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि ये ऐसे आगे चलेगा. तो बेसिकली इरफान भाई जब कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोसीडिंग हुई ना, I would not say किसकी कॉल आई किसकी नहीं. The honorable chief justice is having great integrity. But apparently it was the wisdom of the court. The court could have done whatever the court would have done. You see, it can go anywhere. It was a borderline. मेरा सिर्फ argument one-liner था कि my lord, given the circumstances, the spirit of the order was the spirit of the order passed by the court should be implemented in a way कि border line पे हूँ ना मैं 10 मीटर पीछे हूँ या 10 मीटर अंदर हूँ या बिल्कुल border के ऊपर हूँ. So उसमें हमेशा अपने लिबरली कंस्ट्रू करना होता है. बट आई विल गो विद द विजडम एंड सैटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट. You see, Irfan bhai, I am a professional lawyer, and a lawyer is always to be known by the conduct, a conduct that he shows and he keeps that conduct in a court of law. उसकी बेसिस पे ना आप बहुत से रिलीफ कोर्ट से लेते हैं. रिलीफ ले सकते हैं. Very professional conduct rather than becoming emotional, started crying, making huge. You had to perform like a true professional. आपके प्रोफेशनल कंडक्ट की बेसिस पे ना जिंदगी में आपको वो भी रिलीफ मिलते हैं जिसके आप शायद इतने ज्यादा मेरिट्स में ना हकदार नहीं होते. कोर्ट्स आउट ऑफ द वे भी जाती हैं. बट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन कोर्ट ने अपना विजडम अप्लाई किया. आई एम स्टिल हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड बिकॉज finally at the end of the day it's a court of law. It's their judicial verdict and opinion for which I am bound to respect that. Not only me, Imran Riaz Khan is fully 100% obedient and he has to submit under the law. He is also happy with whatever happened. So next day we straight away, मेरी चुके I have an office, मेरी law firm के 6 ऑफिस हैं लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में, and not many people knew that. Or particularly those who were messing with him was having a little idea, but they were never having the idea. तो ये मेरी जो पूरी law firm है इसके 50-60 लोगों के जितने रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है ना 50-60 लॉयर्स के अंडर वन रूफ, आई विल बी जस्ट वो सब एंगेज्ड है. At one time me and my 7-8 associates were in Islamabad High Court and my 5 associates were with him in Attak at the same time. तो 13 वकील अच्छा, they were waiting for you there. Okay. At the same time. मैं 10 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था. मेरी टीम वहां पे सुबह 5 बजे निकली है, इमरान के पास 7:45 बजे पहुंची है, and they were there at 8 o'clock when he was produced because हमें पता है how does it goes on. और इस तरह के hostile circumstances में
ये जो टॉम एंड जेरी शो है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ही कैसे प्ले करती है। तो हम जिससे कहते हैं ना बैरियर लगा देना, नाका लगा लिया था हमने कि पुलिस जब भी लेके आएगी ना तो दे वुड नॉट बी एबल टू सरप्राइज अस, because normally people do not have such like resources that I'm sharing it with you कि भाई 13 वकील at the time एक ही law firm से दो शहर संभाले हुए हैं, and we were going with that plan. So and you were always a step ahead of them कि क्या करना चाह रहे हैं वो कंसंट्रेट। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, I'm just putting it on the record, सुनना है जिसने सुन ले, it's like humble it's like a humble thing. I'm not being clever, I'm not being over smart, but I'm being confident and I'm being humble कि भाई it's not that we are way many steps, we are ahead of the curve वाली policy पे चल रहे हैं। True. So we are still going way ahead of the curve. Inshallah, we have had our, देखना, possibly we have calculated whatever would be happening, we have made ourselves understood now. क्या होना है, क्या हो सकता है, उसकी मुख्तलिफ शक्लें और सूरतें कब किस वक्त क्या होंगी, and are we prepared for that or not, and what resources professionally, academically, socially, otherwise media side पे, what do we need, and how good we have planned it, and you have seen the execution of that entire plan. It's not like true. all was scripted, it was planned well, and it was more important कि चूंकि जब मौका आता है ना इरफान भाई, तो बड़े बड़े आदमियों के ना दिमाग रह जाता है, shut down हो जाता है, and it's not easy to then perform in such a hostility जिस तरह अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है, तो अल्लाह ने हमसे मौजूदा तौर पर ये करवा दिया है। So then we went to 2 बजे मैं वहां पे पहुंचा, मैं पहुंच गया था 12 बजे, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में 2 बजे के लिए केस हमने फिक्स करवाया था, बिकॉज आई वुड लाइक यार अच्छा अली भाई थोड़ा सा मिडिल में आ जाइए, सॉरी अच्छा थोड़ा सा मिडिल में आ जाइए, ये फ्रेम थोड़ा सा। जी हाँ। So then what happened was कि 12 बजे के लिए मैं 12 बजे पहुंच गया, लेकिन केस था 2 बजे के लिए फिक्स। 2 बजे प्रोसीडिंग शुरू हुई, 5:30 बजे कंक्लूड हुई। I took about 90-95 minutes of the argument. The other side couldn't answer a single question in the court of law. It was like that, Allah ka shukr hai, we just rooted out their case from the बिल्कुल उसकी bottom से ही ना हमने उखाड़ दिया। Long story short, the judge said कि you have argued the brilliant case, exceptionally well performed, you have made out your case. Unfortunately, I am not the judge who is able to grant you the relief based on my jurisdiction. So the court decided कि मेरी jurisdiction at this point in time नहीं है, go to the Pindi courts. अब आपको मैं बहुत सी बातें जब वक्त गुजर जाएगा तो हाईलाइट करूंगा कि अल्लाह ने फिर मौजे कैसे किए कि 5 बजे जब हमें 5:30 बजे ऑर्डर दिया तो 3 बजे तो ऑनरेबल जज पिंडी के चले गए हुए थे। फिर अल्लाह ने मौजे दिखाना शुरू किए, अल्लाह ने बड़ी मेहरबानियां की, फिर हमने जो भी अल्लाह ने हमारी गैबी मदद की, ऑनरेबल जज को कम्युनिकेट हुआ, वो वापस आए, 7:30 बजे कोर्ट में पहुंचे, हम यहाँ से पिंडी पहुंचे, आर्गूमेंट्स फिर शुरू हुए। देन आई टुक अगेन 30-35-40 मिनट्स अगेन समराइज फॉर्म में आर्गूमेंट किए जो उधर की कोर्ट की जो सेक्शन थी। फिर उस पे तकरीबन 10:30 बजे वर्डिक्ट आया। अगेन द कोर्ट सेड कि जी मेरी जो सेक्शन खत्म हो गई है, लेकिन 80% एफआईआर मैंने खत्म कर दी है जो पैका के ऑफेंसेस हैं। ओके फाइन। फिर मैंने कोर्ट ऑफ लॉ में रिक्वेस्ट की कि सर आप मेहरबानी करें 24 आवर्स का प्रिंसिपल अडहर करें, आपने हमें पार्शियल रिलीफ दिया है, ये तो लिखे कि आज ही पेश करना है। तो कोर्ट वाज काइंड एनफ, उन्होंने कहा आज ही पेश करना है। फिर मैं आपको कभी बताऊंगा कि अल्लाह ने कैसे मौजे दिखाए। दोबारा जो ऑनरेबल जज 5:30 बजे घर चले गए हुए थे, वो 12:30 बजे कैसे वापस आए, वापस अल्लाह ने मौजे दिखाए। रात फिर 2 बजे प्रोसीडिंग शुरू हुई, ऑनरेबल जज आए 2 बजे कोर्ट में पीछे चेंबर में आ गए, 2 बजे शुरू हुई, तकरीबन 3:30-4 बजे प्रोसीडिंग खत्म हुई, 4:45 बजे वर्डिक्ट रिजर्व हो गया, 7:45 बजे वर्डिक्ट अनाउंस हुआ, अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। आई थिंक दैट वाज द स्टार्ट ऑफ एवरीथिंग। Nobody was expecting in the entire country, and particularly the people responsible for this entire, the people who has orchestrated this entire thing was they were like, yeah, how is that even possible? This was not to be seen. Even पहले ही पर्चे में तो महीने 2-3 महीने गुजारने थे. How it was even remotely possible that these people would be just taking the action and it would go such successful. वो फिर जो रिटेलिएशन आई है पहले मुकदमे के खारिज होने से और स्ट्रेट अवे जब हमने इसकी अरेस्ट को वॉलंटियर किया, आई थिंक दैट हैज चेंज्ड द एंटायर कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग बेस्ड ऑन पर्टिकुलरली द फैक्ट because the FIRs were of the similar nature. So the ground for the future proceeding was set in a manner where we were having the advantage from the case one, day one. And that was the beginning of an uphill task, uphill legal battle that I was thinking कि यार मुझे अब ये फेस करनी है. And then straight away without any break we went to चकवाल में सारा दिन जाया किया। 10 बजे आ रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं, 4 बजे आ रहे हैं। सडनली जो भी शहजादे थे
उन्होंने मेहरबानी की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने, कोर्ट ऑफ लॉ की लाइटें बंद हो गई, हम बाहर से वेट कर रहे थे एंड पता लगा जी द ऑनरेबल जज हैज लेफ्ट द कोर्ट. नेक्स्ट डे पूरी रात मुझे वहां पे पहरा देना पड़ा बिकॉज द हॉस्टिलिटी वाज मल्टीप्लाइंग and the sensitivity and all those things that were attached with it were again, you know, like उनको एक ऐसा booster लग गया, rocket लग गया, everything started multiplying so quickly. So उसको उसी एनर्जी के साथ उसी So where पूरी was तवानाई Imran के at साथ. that time? क्योंकि वो भी एक मसला आया था कि इमरान was not in main वो जी जी अब ठीक है चकवाल जी. थाना सदर. हाँ जी. हाँ अच्छा वो इमरान भी नहीं था वहां पे. अच्छा वो पुलिस थी, पर्चा था थाना सदर चकवाल का, रखा इमरान को हुआ था ढडियाल पुलिस स्टेशन में. सो दीज वर दीज वही व्हेन आई से टॉम एंड जेरी, यू नो, टैक्टिक्स. वो तो सारा क्या पिंग जरूरत है पोंग भाई, बिल्कुल सही. ट्रीट हिम लाइक अ नॉर्मल मैन. तुमने स्टेट के 500 लोग लगा दिए हैं, 8 जिलों की पुलिस लगा दी है. जस्ट इमेजिन, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यार लाखों करोड़ों रुपया तो इन्होंने जाया कर दिया पेट्रोल पे ही. इतनी गाड़ियां 500 लोग लगाने की भाई क्या जरूरत है? Because they were expecting the massive reaction from the public, and that was actually there as well in a way. But then I would say, भाई किया है तो भुगतो ना, क्या हो गया है? अब वजन तो डालो पांव पे. The reaction was so big. Why did you do that in the first place? Anyhow, local district bar तक के लोगों ने, they have helped us, they have supported us. Immense lawyer support, immense public support. I put my appreciation for all of them. I cannot thank any of them. Even the local politician of, you know, a particular party, they were there all out. Allah का बड़ा शुक्र हुआ, Allah ने बड़ी मेहरबानी की. It went very well. Chakwal, we received the same, you know, treatment from the public and the bar. Long story short, I was there for the entire night. A lot of other people were there for the entire night. I left, you know, early morning. Late night, I just went back to Islamabad because I was sweat. I had to change the clothes. So emergency mode पे straight away गए हैं. My team was there. We were like 50% again on the idea कि यार ये Tom and Jerry show खेलेंगे, so we should be ready for that. So again, I went back. Honestly, they just give 2 घंटे नहीं दिए और वही हुआ. Something exactly we were expecting has happened and came back to Chakwal. चकवाल में फिर we contested. बड़ी hostile circumstances थे, अदालतें बंद हो गई, वकीलों ने दरवाजे तोड़ दिए बाहर से. They had to lodge the protest कि यार ये क्या बदतमीजी है, right of audience allowed का, so on and so forth. Long story short, हमें partial relief मिला, फिर relief ना मिला. लाहौर पुलिस पहले मौजूद थी, लेके हमें लाहौर आ गए. लाहौर टूल प्लाजा पे इन्होंने हमारे से जो ड्रामे किए हैं, उसको प्राइवेट गाड़ी पे बिठाया. जो हमारा शक था, जो हमें सोर्सेज इंफॉर्मेशन बहुत ही रिलायबल, बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अल्लाह ताला ने बड़े ही गैबी इमदाद जो से फरमाई, बड़े ही इंपॉर्टेंट जराए से जो सा चीजें हमारे तक पहुंच रही थी. इवन देन आई वुड फ्रैंकली कंसीड, लोग रो रहे थे. इंतहाई अहम जराए से जो चीजें आ रही थी वो भी लोग रोने लग गए. I'm sure. वेरी बैड प्लान. हो सकता है उसके कभी अपनी नीयत हो या उसका मिजाज हो, कभी ऐसे वक्त और हालात हो, 6 महीने साल 2 साल बाद तो ये बातें हो सकता है निकल जाए, और हो सकता है ये दबी रह जाए, और अल्लाह जानता है इसका क्या होना है. नेवरदलेस हमें लाहौर में एंटर होके 25 से 30 मरतबा गाड़ियां डॉज करनी पड़ी. I had to go beyond my professional boundaries. As a lawyer, I was having a certain responsibility and I could not go beyond the barriers of my code of conduct. As a friend, I was like, yaar, zindagi maut hai. I could not leave him. Even if I had to just, you know, get myself killed, and I would not have to leave him because the news, the information was so terrible कि हम किसी भी तरह compromise नहीं कर सकते थे. And I tell you, it was an accurate information because the way they have conducted themselves, Lahore police in Lahore on a private car, 10 गाड़ियां हमें डॉज करती गई, हमें इंटरसेप्ट किया पुलिस ने, कई दफा रोका. सो भाई क्या हो गया, तुम उसे 8 सरकारी गाड़ियों में लेके आए चकवाल से लाहौर, सडनली तुमने एक गाड़ी में चेंज किया. व्हाट वाज योर प्लान? वेयर आर यू ट्राइंग टू टेक हिम? I mean, why this entire fuss? So this abnormal action that they have taken at the last time was obvious of the fact, ओए ये तो बात बिल्कुल वही है जो किसी ने बताई है, और चीजें उस तरफ ही जा रही हैं जो एक्सट्रीमली हॉस्टाइल हैं. लास्ट एंड फाइनल स्ट्रेच तक हमें अपने ब्रेथ के जाना पड़ा, और फिर हमने इसकी वो जो सेफ्टी है इन लाहौर को सिक्योर की और इसको पुलिस के एक सेंटर के अंदर पहुंचाना था, जहाँ पे फिर मीडिया केम इन एंड आई कॉल्ड अ लॉट ऑफ लॉयर्स, दे केम इन, then lot of media came in and everybody was able to handle the transaction in a very particular and smooth manner. फिर उसके बाद आपने देखा कि लाहौर में प्रोड्यूस किया, अल्लाह ने एक मौजज़ा दिखाया, अल्लाह ने गैबी मदद की. मैं सुबह 4 बजे लाहौर हाई कोर्ट से निकला पिटीशन फाइल करके. बहुत से लोग जिनको दिलचस्पी थी कि भाई ये हो क्या रहा है रात को,
क्या हो रहा है, कौन है ये, क्या कर रहा है, सो वन सो फोर्थ। अल्लाह ने खैर बहरहाल बड़ा मौजज़ा दिखाया, अल्लाह ने बड़ी कभी मदद की। नेक्स्ट डे लोगों को पता उस वक्त लगा हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग, जब मैंने एग्जैक्टली 1 आवर प्रायर टू द प्रोसीडिंग जब मुझे कॉल आई कि जी आपकी पिटिशन नंबर लग गया है, इट इज नाउ फिक्स फॉर हियरिंग आफ्टर 1 आवर, देन आई हैड टू मेक इट पब्लिक बिकॉज आई वाज इन द Kent courts. From the Kent courts at 12 o'clock I had to make an announcement. I had to go to the Lahore High Court. In the meantime, half lawyers were in Kent courts, half lawyers were in Lahore High Court. Then I had to एक मोर्चा इधर संभाला हुआ है, Lahore High Court गया. Then you see the proceeding. The honorable judge was very kind. It was a balanced proceeding. I would not take fair or unfair advantage over my other party, adverse party, because this is how I would have to keep myself professional, as good as possible, जितनी मैं कोशिश कर सकता हूँ. फिर आपने अल्लाह ने बरकत डाली, रिजल्ट देखा, दोनों जगह से रिजल्ट वही आया जो अटक का था, वही आया जो पिंडी का था. अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई है. Here we are. From here on, tomorrow we are leaving for Chakwal, and Chakwal, inshallah बारिक ताला, जब हम सुबह जाएंगे, so we will be joining the proceeding in Chakwal courts as per the order of the honorable court, and inshallah बारिक ताला once we will go there and we will join the proceeding, तो inshallah बारिक ताला हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे कल के मामला भी बड़ी आसानी पैदा फरमाएगा, और आने वाले वक्त के लिए whatever is going to be the circumstances, inshallah we are ready for that, और अल्लाह से यकीन है कि अल्लाह पाक इंशाल्लाह बरकतें फरमाएंगे. This is the अच्छा, बट फाइनल क्वेश्चन, बस आप बहुत टाइम हो गया, आपने जाना था. अब बस ये बताएं कि जो सूरत हाल चल रही है, हमें जो मार्केट से पता चल रहा है वो ये है कि ये ईद का वेट कर रहे थे, क्योंकि ईद के बाद इन्होंने कुछ चीजों को करना, जैसे शरीफ के हवाले से भी बात आ रही है, समी इब्राहिम के हवाले से भी बात आ रही है कि ईद का वेट कर रहे थे, उसके बाद इन्होंने करना है. सो कल का दिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 13th. कल तक की बेल थी मेरा ख्याल है आपके पास, आज रात तक की या कल तक की बेल है, उस पे थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए, लोग उसको सुनना चाह रहे हैं कि कल के क्या प्लानिंग है. इरफान भाई, tomorrow we will go in Chakwal. We are now having 3 verdicts: Lahore, Atak, as well as Rawalpindi. We have a very strong case. I might surprise you tomorrow, and the surprise might be, inshallah, might be bigger than everything. जो हो सकता है अभी तक आया ना हो. वाओ. अभी मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह बरकत डाले. इस वक्त तक मैं कह सकता हूँ इंशाल्लाह एक सरप्राइज आ रहा है. अल्लाह ने बरकत डाली तो सरप्राइज आएगा इंशाल्लाह. अल्लाह ने की मदद हुई जैसे है, अल्लाह की मदद कल तक शामिल हाल रही तो बड़ा सरप्राइज आएगा. वरना ये भी सरप्राइज आएगा कि इंशाल्लाह कल हम चकवाल से भी जो है वो सुरखरू होंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह बारिक ताला इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट कि वो हाउ वुड दे बी एक्टिंग. इट ऑल डिपेंड्स ऑन देम. अगर वो इसको फर्दर अरेस्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले बड़े हौसले में रहा है, I think they should not be doing it. It is my personal perception. But if they are going to do that, okay, so be it. We have seen it. We have honorably passed it. We are more ready than ever. The public is awakening. The media is also awakening. We are hoping for the best, inshallah. Barik Allah, Irfan bhai. इंशाल्लाह. आप अली बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारा टाइम दिया, बहुत सारी बातें जो भी करनी है, लेकिन मैं इंशाल्लाह लाहौर चक्कर लगाऊंगा, मिल बैठ के करेंगे इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड गुड लक फॉर टुमारो एज वेल. इंशाल्लाह. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. थैंक यू. हाफिज.